So good afternoon everyone. Subha Paranna. ମୁଁ ହଉଛି ଅମ୍ଲାନ ଅଂଶୁମତ ସାହୁ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର MBBS ଛାତ୍ର। ମୋର NEET 2022 ରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ଥିଲା 424। ତ ଆଜି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ ଚାପ୍ଟରରେ ଯୋଉଟା କ୍ଲାସ୍ 11th କେମିଷ୍ଟ୍ରିର ୟୁନିଟ୍ 5। ତ ସେଇ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ରିଆକ୍ସନ ଏନ୍ଥାଲପିସ୍ ଅଫ ଦ ରିଆକ୍ସନ, ହିଟ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଉ ଥର୍ମୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି। तो ये पढ़ेगा आज enthalpy change, that is enthalpy of reaction, that is reaction enthalpy. Okay. तो एटा हमें फर्स्ट क्लास रे ब्रीफली फास्ट रिवीजन कर देथिले, तो सेटा आउस रे हमें गोटे रिवीजन करया। तो रिएक्टेंट्स रो प्रोडक्ट्स हुए और एंथैल्पी चेंज जो ए रिएक्टेंट्स दौरान हुए माने ए रिएक्शन टाइम रे जो एंथैल्पी चेंज हुए सेटा को जाए रिएक्शन एंथैल्पी। और एंथैल्पी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को लिखा जाए del HR, that is enthalpy change during the reaction. Enthalpy change of the reaction होची sum of the enthalpies of the product minus sum of the enthalpies of the reactant, सब word. Okay, sum of the enthalpy of product minus sum of the enthalpy of reactants. The first name was standard enthalpy of reaction कौन? Standard enthalpy of the reaction is the enthalpy change of a reaction where all the participating substances are in the standard state. So standard enthalpy of reaction होची सही enthalpy change जत्ते से reaction रे सबो participating substances निज standard state रे रहिबे, both reactants as well as products depend करे, but standard enthalpy सेतेबेले को जाउ जत्ते सबो reactants निज standard state रे रहबे। और standard state कोन? Standard state होची गोटे specified temperature and 1 bar pressure रे गोटे सब्सटेंस रो प्योर फॉर्म गोटे स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया थिबो और 1 बार एटमॉस्फेरिक 1 बार प्रेशर मींस इट्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो गोटे स्पेसिफिक टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर रे से सब्सटेंस रो जो प्योरेस्ट फॉर्म अछि सही टेम्परेचर और प्रेशर रे सेडा को जाय स्टैंडर्ड स्टेट। फॉर एग्जांपल इथेनॉल रो स्टैंडर्ड स्टेट होछि प्योर लिक्विड। सॉलिड आयरन स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ प्योर आयरन इज द सॉलिड आयरन 500 केल्विन रे, इथेनॉल रे 298 केल्विन एंड प्रेशर 1 बार रहबो। तो स्पेसिफाई करा वाला टेम्परेचर सेपरेटली बट प्रेशर कॉमन हला 1 बार। यूजुअली डाटा इज टेकन एट 298 केल्विन। तो जदि हमको स्टैंडर्ड स्टेट पचारछि, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस जदि हमको पचारछि सेडा सब बेले हबो 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर रे। एटा को आजिबो स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड कंडीशंस लिखा पे कोई भी थर्मोडायनामिक फंक्शन ऊपर हम गोटे सुपरस्क्रिप्ट देबा एमिडिया साइन, सेडा डिनोट करिवो स्टैंडर्ड स्टेट रे एंथैल्पी बा एंट्रोपी बा इंटरनल एनर्जी चेंज जोड़ा भी। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन हम जानचे फेज ट्रांसफॉर्मेशन बेले सब बेले कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, दैट इज del P equal to 0 and del T equal to 0. Enthalpy during phase transformation like during conversion of solid to liquid by liquid to gas सब बेले temperature and pressure constant रहेगा, that is change in temperature equal to 0 and change in pressure equal to 0. ଆଉ phase transformation को सब बेले लिखा जिवो सेडा equilibrium condition रे अछि। like जेबे भी हमें लिखिबा H2O liquid is getting converted to H2O gaseous, केबे भी ए सिंगल डायरेक्शन वाला एरो रहबनी, सबोडे सेंटर रे इक्विलिब्रियम वाला साइन रहबो which shows that both the phases are in equilibrium, दीटा जाको फेज इक्विलिब्रियम रे रहसंदी। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन सबोडे इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन नॉर्मली मेल्टिंग और व्हाटएवर सेटा सबोडे कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेंपरेचर रहबो। फॉर एग्जांपल अबे हमें पढ़िबा व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कोन? Standard enthalpy of fusion होची enthalpy of fusion of the substance in a standard state. Okay, so enthalpy of fusion in the standard state is standard enthalpy of fusion. So the enthalpy change that accompanies melting of 1 mole of a solid substance in its standard state is called standard enthalpy of fusion or molar enthalpy of fusion. So standard enthalpy of fusion कौन? सेही एंथैल्पी चेंज जत्ते बेले 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस गोटे सॉलिड सब्सटेंस रो 1 मोल निज स्टैंडर्ड स्टेट रे जत्ते बेले मेल्ट हबो सेडा को आजिबो से एंथैल्पी चेंज को आजिबो मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन।
ଏଇ ଟେବୁଲରେ କିଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏନ୍ଥାଲପି ଅଫ ଫ୍ୟୁଜନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭେପୋରେସନ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହବ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏନ୍ଥାଲପି ଅଫ ଫ୍ୟୁଜନ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ହବ, ସେଇ ଟେମ୍ପରେଚର କୁ କୁହାଯାଏ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ସଲିଡ। ସିମିଲାରଲି ଭେପୋରାଇଜେସନ କେସ ରେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ମେଣ୍ଟେନ ହବ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ବଏଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ବା TB। तो what is standard enthalpy of vaporization? Standard enthalpy of vaporization by del H vaporization with superscript is the amount of heat required to vaporize 1 mole of a liquid. Everywhere तमे जोड़े भी देखियो standard enthalpy लिखा है माने सेटा सब बड़े 1 mole of the substance पे define होगा। तो amount of heat required to vaporize 1 mole of a liquid at constant temperature and under standard pressure is called standard enthalpy। तो अमाउंट ऑफ हीट जोड़ा गोटे मोल ऑफ लिक्विड को गोटे कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर रे वेपोराइज करबा पई दरकार सेडा को कहजिबो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। नाउ सब्लिमेशन इज अ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर, एडा हम जानचे। तो एई केस रे जेमिति स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और वेपोरेशन हला, एई केस रे डिफाइन होबो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी सही 1 मोल ऑफ अ सॉलिड को जदि हम डायरेक्ट वेपर स्टेट को कन्वर्ट करिवा at a constant temperature and under standard pressure जो एंथैल्पी दरकार हमको सेडा होची स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एटा गोटे क्वेश्चन देखिबा। A swimmer coming out from a pool is covered with a film of water weighing about 18 gram. How much heat must be supplied to evaporate this water at 298 Kelvin? Calculate the internal energy of evaporation at 298 Kelvin। से कोची गोटे 18 ग्राम वाटर अच्छी स्विमर गोटे बाहर अच्छी ता देहरे 18 ग्राम अच्छी केते हीट दरकार हो सेही वाटर को इवापोरेट करिया पई। सी डेल एच वेपोरेशन ऑफ वाटर देछि 44.01 किलोजूल पर मोल। ओके, तो 18 ग्राम वाटर माने 1 मोल वाटर सेटा को वेपोराइज करिया पे ऑब्वियसली हमु एती ही एनर्जी दरकार पड़िबो। देखो सी हमु कोन कहछि हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड, तो एटा होछि वेपोराइजेशन रो केस। वेपोराइजेशन सब गोटे कांस्टेंट प्रेशर रहबो, हम जानछि कांस्टेंट प्रेशर रे हीट इक्वल टू del H। तो हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड मींस सी del H पचारछि del H। now del H evaporation standard state रहउछि पर मोल एती किलो जूल हमको दरकार। तो 18 ग्राम माने 1 मोल, तो आंसर भी हबो 44.01 किलो जूल 1 मोल वाटर को वेपोराइज करे पे। नाउ से पचारछि इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन, हमें जानछे del H इक्वल टू del U प्लस P del V, राइट। देखो del U evaporation इक्वल टू del H माइनस P del V हबो, दैट इज P del V को हमें del NG/RT भी रखि परिबा। तो del H evaporation माइनस del NG/RT केते हबो? del NG/RT कोन हला एठी देखो, एटे कोन होची H2O लिक्विड कन्वर्ट होची H2O गैसियस रे, मींस टोटल del Ng जो अछि सेडा +1 अछि, del Ng +1 अछि बिकॉज़ 1 मोल ऑफ लिक्विड 1 मोल ऑफ गैस से कन्वर्ट होची। 1 मोल केमिति जणा पड़ला बिकॉज़ से एठी कहिची 18 ग्राम, 18 ग्राम माने 1 मोल। तो एटा माइनस 1 मोल इंटू आर वैल्यू इंटू टेम्परेचर निया गला। एटी जेतु से किलो जूल रे देछि हमें सेटा को जूल रे कन्वर्ट करिया पे जूल रे नै गले बिकॉज़ 8.314 टा जूल पे, तो सेटा किलो जूल रे नेछि माने हमें डिवाइडेड बाय 1000 करले तो एठो आंसर मिल गला हमको 41.53 किलो जूल। ओके, नेक्स्ट जीवा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कोन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होछि the enthalpy change for 1 mole formation of 1 mole of a compound from its elements in their most stable state is known as standard molar enthalpy of formation। तो जदि गोटे कंपाउंड फॉर्म हला निजर एलिमेंट्स रो आउ को अदर कंपाउंड्स नै निजर ही एलिमेंट्स रो तार कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो माने अछंती सेही निज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स रो गोटे कंपाउंड फॉर्म होला और से कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स निजर मोस्ट स्टेबल स्टेट बा स्टैंडर्ड स्टेट बा रेफरेंस स्टेट रे रहबा दरकार और से जो कंपाउंड फॉर्म होबा सेटा 1 मोल फॉर्म होबा दरकार। ए तीनटा कंडीशन, कंपाउंड 1 मोल फॉर्म होबा दरकार, कंपाउंड निज एलिमेंट रू फॉर्म होबा दरकार और से जो एलिमेंट्स अछंती निजर स्टैंडर्ड स्टेट बा मोस्ट स्टेबल स्टेट रे रहितबा दरकार। सेते बेले जो एंथैल्पी चेंज होबो सेटा को डिफाइन करा जिवो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल एटी रेफरेंस स्टेट ऑफ डाई हाइड्रोजन देछि से H2 गैस, डाई ऑक्सीजन रो O2 गैस, कार्बन रो ग्राफाइट और सल्फर रो रॉम्बिक सल्फर।
Okay, so it is important to understand that the standard molar enthalpy of formation is just a special case of molar enthalpy of reaction. Obviously, formation enthalpy, reaction enthalpy are a special case, where 1 mole of a compound is formed from its constituent elements, as in the above three equations, where 1 mole each of water, methane, and ethanol is formed. In contrast, the enthalpy change for an exothermic reaction, calcium oxide plus carbon dioxide plus gives us to calcium carbonate. देखो ये 1 mole form हला calcium carbonate, but से निजर elements रू form ना है कि other compounds रू form. तो ये enthalpy change को molar enthalpy of reaction को आवने, not an enthalpy of formation. Okay. Similarly, जब हम A reaction देखेगा, ये hydrogen और bromine निजर elements रू form हला एलिमेंट्स पे निज स्टैंडर्ड स्टेट रचनी हाइड्रोजन गैस रे और ब्रोमीन लिक्विड रे बट 2 moles फॉर्म ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ standard molar enthalpy of formation କୁହାହବନି standard enthalpy of formation କେତେବେଳେ କୁହାହବ ଯେତେବେଳେ whole equation ଟାକୁ divided by 2 କରିଦବା divided by 2 କରିଦେଲେ କଣ ହବ 1 mole of HBr ଫର୍ମ ହେଇଯିବ ତ ସେଇ ତ enthalpy change କୁ କୁହାହବ ତ ଏଇ ଯୋଉ reaction enthalpy ଅଛି ଏଇ reaction enthalpy is 2 times of the molar enthalpy of formation of HBr. Next, standard enthalpy of formation of an element in the reference state, that is its most stable state, is taken as 0. एटा ଗୋଟେ important point. कोई भी जब देखो जल्दी हमें गोटे कंपाउंड फॉर्म कले निज constituent element in standard state रू 1 mole फॉर्म होला तो ସେଇଟା କୁ କୁହାଗଲା standard molar enthalpy of formation. बट एटा को कौन कुहाଯିବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ element ର ହିଁ ଆମେ standard enthalpy of formation element तो ଆଉ को special element is the smallest ଆଉ ତାକୁ ଆମେ separate ଜିନିଷରେ break କରିପାରିବାନି तो एलिमेंट निजरू ही फॉर्म होची और सेटा रेफरेंस स्टेट रस मींस किछि तार मीनिंग ही नहीं तो मोस्ट स्टेबल स्टेट रे एलिमेंट रो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होची 0 किछि एनर्जी दरकार नहीं बिकॉज़ से ऑलरेडी तार मोस्ट स्टेबल स्टेट रे अछि ताको फॉर्मेशन पे आउ किछ दरकार नहीं से ऑलरेडी से ही स्टेट रे एग्जिस्ट करे ओके नेक्स्ट एट तीनटा रूल देछि अबाउट thermochemical equations विषय the coefficients in the balanced thermochemical equation refer to the number of moles and never molecules of reactants and products involved in the reaction तो ଗୋଟେ balanced thermochemical reaction ରେ ଯାହା coefficient ରହେ ସେଟା ସବୁବେଳେ number of moles କୁ denote करे ଆଉ not the molecules of reactants and products ଯାହା ବି ସେଇ reaction ରେ involve ହେଇଛନ୍ତି the numerical value of the enthalpy of reaction refers to number of moles okay तो जो number of moles of substances specified by the equation ଅଛି ସେହି number of moles of substances ପାଇଁ ହିଁ enthalpy of reaction ସବୁବେଳେ ହୁଏ enthalpy of reaction not necessarily equal to enthalpy of formation ଯେମିତି ଆମେ ଏଇ କେସ ରେ ଦେଖିଥିଲେ ତ ଏଠି ଯଦି 2 ଲେଖା ହେଇଛି ତ enthalpy of reaction 2 moles ପାଇଁ ଅଛି ଓକେ so third ହଉଛି ଯଦି ଆମେ chemical equation କୁ reverse କରିବା enthalpy of reaction ର sign ବି reverse ହେଇଯିବ obviously because ଯଦି formation ବେଳେ exothermic ହଉଛି ତ break ବେଳେ ସେଟା endothermic ହେଇଯିବ right नेक्स्ट देखिए हमें हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन कौन हेस लॉ को है कि जदि गोटे रिएक्शन several step रे exist करे then its standard reaction enthalpy is the sum of the standard enthalpies of the intermediate reactions into which the overall reaction may be divided at the same temperature तो हेस लॉ कौन को है जदि गोटे रिएक्शन को हमें several steps रे carry out करिया पई चाहू then its standard reaction enthalpy जो थाए सेटा sum of the standard enthalpies of the intermediate reaction हबो ସେଇ ଯୋଉ intermediate reaction ଫର୍ମ ରେ ଆମେ ସେ whole reaction କୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା ତ ଯଦି ଆମେ whole reaction କୁ ଗୋଟେ 5ଟା reaction form ରେ ଭାଙ୍ଗୁଛେ ତ ସେଇ main reaction ର standard reaction enthalpy ଟା sum of the enthalpies of those individual reactions ହବ okay फॉर एग्जांपल जदि एटे A रू कन्वर्जन होची B रे और रिएक्शन एंथैल्पी होची del HR बट गोटे सेटा को जदि हमें तीनटा वे रे तीनटा माइनस स्टेप रे ब्रेक करबा लाइक A टू C C टू D और D टू B तो एडा रे जदि del H1 del H2 और del H3 होची से तीनटा रे रिएक्शन एंथैल्पी सो del HR is will be the sum of del H1 plus del H2 plus del H3 ए तीनटा रे एडिशन हबो del HR एटा ही हैस लॉ
नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन कोन? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन होची सही एंथैल्पी चेंज जेतेबेले 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस अंडरगोस कंबशन और सब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स निज स्टैंडर्ड स्टेट रे रहिबे। एंथैल्पी चेंज मन रखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन होची एंथैल्पी चेंज जेतेबेले 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंबशन अंडरगो करबो और सब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स निज स्टैंडर्ड स्टेट रे रहिबे सही स्पेसिफाइड टेंपरेचर रे। ओके आ मन रखो गोटे जिंस कंबशन केस रे रिएक्शन एंथैल्पी हबो टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। रिमेंबर एटा गोटे इंपोर्टेंट जिंस कंबशन केस रे आउ जेतेबेले भी सी हमको बॉन्ड जेतेबेले भी सी हमको कंबशन एंथैल्पी देछि। रिमेंबर जेतेबेले सी हमको कंबशन एंथैल्पी देछि आउ बॉन्ड एंथैल्पी देछि ए दुटा केस रे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू टोटल enthalpy of reaction enthalpy change of reaction will total enthalpy of reactants minus total enthalpy of products এটা important whereas ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ formation enthalpy ଦେଇଛି ସେଇ केस रे कौन हबो enthalpy of the reaction will be equal to total enthalpy of product minus total enthalpy of reactants. Okay, next होची enthalpy of atomization. enthalpy of atomization कौन कहूची एंथैल्पी ऑफ ऑटोमेशन होची सही एंथैल्पी चेंज जेतेबेले गोटे मोल बॉन्ड को हमें ब्रेक करिकि एटम्स ऑब्टेन करबा और से एटम्स गैसियस फेज रे तो एटा होते तीनटा जिंस इंपोर्टेंट। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होची सही एंथैल्पी चेंज जेतेबेले 1 मोल हबा दरकार बॉन्ड केते बॉन्ड ब्रेक होची 1 मोल बॉन्ड ब्रेक हवा दरकार प्रोडक्ट्स जाको एटम फॉर्म रे आसवा दरकार और एटम्स जाको गैसियस फेज रे रहथवा दरकार ए तीनटा इंपोर्टेंट पॉइंट। Now, products are the only atoms of carbon and hydrogen in the gaseous phase. जेतेବେଳେ ଆମେ CH4 ର bond break विषय देखुचे bond atomization करछे तो सेतेବେଳେ CH4 gaseous को ଆମେ carbon gaseous और hydrogen gaseous रे convert करछे देखुछन ना carbon gaseous hydrogen gaseous काहे ना सी कहछि products atoms से दरकार atoms gaseous form रे रहबा दरकार। Products are only atoms of carbon and hydrogen in the gaseous phase. नेक्स्ट होची बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी दीट प्रकार हमें कहि परिबा गोटे होची बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और होची मीन बॉन्ड एंथैल्पी। जति गोटे बॉन्ड ब्रेक होची सेटा पे हमें टर्म यूज करिवा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जति गोटे टाइप रो मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक होची गोटे कंपाउंड रे सेटा को हमें डिफाइन करिवा सेतले मीन बॉन्ड एंथैल्पी। तो कहने देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कोन सेटा होची सही एंथैल्पी चेंज जेतले 1 मोल ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हबो into of a gaseous covalent compound मन रखो covalent compound सब बड़े gaseous हेतिवा दरकार सेटा 1 मोल हेतिवा दरकार और products जाको gaseous phase रे फॉर्म हवा दरकार। very important point ए तीनटा मन रखो bond dissociation enthalpy केतेबेले डिफाइन हबो जेतेबेले सेही प्रोडक्ट जोड़ार बॉन्ड ब्रेक होची सेटा 1 मोल थिबो सेटा गैसियस थिबो और प्रोडक्ट भी गैसियस फॉर्म रे ही आसीबे। और जतरा में CH4 को गैसेस ब्रेक करी कार्बन गैसेस और हाइड्रोजन गैसेस करवा ए केस रे एटा एटमाइजेशन एंथैल्पी विल बी इक्वल टू द मीन बॉन्ड एंथैल्पी। मीन बॉन्ड एंथैल्पी काई ना एतरे चारटा CH बॉन्ड अछि तो एटा सब CH बॉन्ड को ब्रेक करिया पे इंडिविजुअली अलग अलग एनर्जी दरकार। तो एज ए होल जदी हमें मीन बॉन्ड एंथैल्पी डिफाइन करिया तो ए चारटा जगर सम डिवाइडेड बाय 4 करिके हमें करिवा कि मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन गैसियस मीथेन। ओके तो बॉन्ड एंथैल्पी केस में ऊपर लिखी थी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन विल बी टोटल बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस टोटल बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स। लैटिस एंथैल्पी कोन लैटिस एंथैल्पी सही एंथैल्पी जेतेबेले 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड हवा दरकार नरे लैटिस एंथैल्पी डिफाइन हबनी। आयोनिक कंपाउंड हवा दरकार 1 मोल हेतिवा दरकार आउ सेटा निजर आयन्स रे डिसोसिएट हेतिवा दरकार और आयन्स एको गैसियस स्टेट रे हेतिवा दरकार। तो लैटिस एंथैल्पी केतेबेले डिफाइन हबो गोटे मोल आयोनिक कंपाउंड जेतेबेले ब्रेक करिवो गैसियस स्टेट रे निज आयन्स इनटू ओके। अब लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट करिया पे हमें बॉर्न हैबर साइकिल यूज करिया। बॉर्न हैबर साइकिल कोन तो हमें देखियो कि सोडियम क्लोराइड सॉलिड केमिति सोडियम प्लस गैसियस और क्लोरीन माइनस गैसियस है गला ए भितरे बहुत सारा एंथैल्पी अछि बहुत सारा टाइप र एंथैल्पी जो मानकर एडिशन होछि लैटिस एंथैल्पी। तो एटा हमें हेस लॉ यूज करिवा और ए साइकिल को बॉर्न हैबर साइकिल को अछि।
फर्स्ट कौन होला देखो NaCl रू NaCl रो जो Na थिला सॉलिड देखो सोडियम सॉलिड जो थिला सेडा हम फर्स्ट सोडियम गैसियस कन्वर्ट करले सेडा हला सब्लिमेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम तापर सोडियम गैसियस को हमें गोटे इलेक्ट्रॉन रिमूव करले आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम तापर हाफ ऑफ द Cl2 रो हमें Cl गैसियस करले अधा डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन तापर Cl गैसियस रो हम गोटे इलेक्ट्रॉन ऐड करले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ए सब जाको जतले हम ऐड करबा ए सब रो एडिशन आसीबा लैटिस एंथैल्पी यूजिंग हेस लॉ एटा दिटा इंपोर्टेंट फार्मूला अछि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विषय रे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस 5/2 RT इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT ओके sum of the enthalpy changes round a cycle is always zero तो एई जिंसटा हमें स्टार्टिंग रे भी पढ़थिले गोटे साइक्लिक प्रोसेस जदी गोटे साइक्लिक प्रोसेस अछि सेही केस रे del h इक्वल टू del u इक्वल टू 0 काहे कि del h इक्वल टू del u इक्वल टू खाली del h और del u नै del g इक्वल टू del s इक्वल टू सब 0 बिकॉज़ रिमेंबर गोटे साइक्लिक प्रोसेस रे all state functions is equal to 0 काहे कि स्टेट फंक्शन डिपेंड करे इनिशियल और फाइनल स्टेट पे इनिशियल और फाइनल स्टेट गोटे साइक्लिक प्रोसेस रे सेम तो सेही केस रे सब स्टेट फंक्शन 0 हो now enthalpy of solution कोन enthalpy of solution of a substance is the enthalpy change when 1 mole of it dissolves in a specified amount of solvent जेतले गोटे enthalpy of solution of a substance is the enthalpy change when 1 mole of it dissolves in a specified amount of solvent. The enthalpy of solution at infinite dilution is the enthalpy change observed on dissolving the substance in an infinite amount of solvent when interactions between ions are negligible. The enthalpy of solution सेତେबेले define हो जेतेबेले 1 mole of a substance को हम गोटे specific amount of solvent रे dissolve करिबा से enthalpy change हबो enthalpy of solution जदि infinite dilution हम सेटा करिबा infinite amount of solvent रे almost interaction between the particles of the solute जो हबो सेटा almost negligible हो जिवो तो सेही केस रे जो enthalpy change हो सेटा हबो enthalpy of infinite dilution the enthalpy of solution हबो sum of enthalpy of lattice enthalpy plus hydration enthalpy काहे कि बिकॉज़ गोटे सब्सटेंस जदि अछि ए बी सेटा सॉलिड स्टेट रे अछि फर्स्ट जेतेबेले सेटा हमें वाटर रे पकेबा सेटा डिसोसिएट करिवो A plus gas into B minus gas तो हमें जानछे गोटे सॉलिड आयोनिक कंपाउंड जदि डिसोसिएट करला निजर गैसियस आयन फॉर्म रे तो सेही एंथैल्पी को कुआ जिवो लैटिस एंथैल्पी तापर सेही आयंस वाटर मॉलिक्यूल सहित इंटरेक्ट करी हाइड्रेशन हेबे तो एक्वस आयंस फॉर्म हबो सेडा कुआ जिवो हाइड्रेशन एंथैल्पी तो टोटल सॉल्यूशन एंथैल्पी बा टोटल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हबो सम ऑफ लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी तो मन रखो गोटे जिंस टोटल enthalpy of solution will be equal to lattice enthalpy plus hydration enthalpy. Okay. The enthalpy of solution equal to lattice enthalpy plus hydration enthalpy. Now enthalpy of dilution kono enthalpy of solution is the enthalpy change associated with addition of specimen to a specimen of solvent at a constant temperature and pressure. So say almost enthalpy of dilution is a special case of enthalpy of solution. Okay. ଏବେ ଆମେ ଯିବା क्वेश्चन प्रैक्टिस करियो तो क्वेश्चन नंबर 12 रु आज स्टार्ट करबा काली हम क्वेश्चन नंबर 12 रे रहिथिले तो आज बहुत सारा प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा
Okay. Okay. The first question goes for the process H2O liquid at 1 bar and 373 Kelvin means at 100 degrees Celsius and 1 bar. 100 degrees Celsius and 1 bar 100 degrees Celsius temperature और 1 bar pressure रे होची माने एटा होची vaporization. Vaporization of H2O liquid into H2O gaseous. और एटा 1 bar और 373 Kelvin रे होची माने हमें confirm हे गले एटा boiling point रे होची means एटा है वो enthalpy of vaporization. Okay. अब ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛେ vaporization ଆଉ fusion ହଉଛନ୍ତି state change reactions. State change reactions. State change reactions ସବୁବେଳେ equilibrium ରେ ରହିବେ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ. State change reactions are always in equilibrium. ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ equilibrium ରେ del G is equal to 0 ହବ. Del G is equal to 0 ହବ. ତ ଏଇ option rejected, ଏଇ option rejected. ଏବେ del S of the system କଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ system କଣ? System ହଉଛି ଏଠି H2O liquid. ଆଉ ସେଇ H2O liquid convert ହଉଛି H2O gaseous ରେ. लिक्विड स्टेट रु गैसीय स्टेट को गले आमे जानछे डिसऑर्डरनेस बा रैंडमनेस बढ़िबो तो एंट्रोपी बढ़िबो तो एंट्रोपी पॉजिटिव हो तो 12 रो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. एबे हमें किछरा एमसीक्यू करबा जोडा थ्योरी ऊपर बेस्ड मोस्टली और सेडा मल्टीपल करेक्ट वाला आंसर्स. ओके मल्टीपल करेक्ट वाला एमसीक्यू और थ्योरी ऊपर बेस्ड अछि तो सेमि दिया किछ क्वेश्चंस करबा. The first question goes identify the intensive quantities from the following. Intensive माने सही quantities जोड़ा matter amount of matter ऊपर depend करेगा. Enthalpy जानचे हमें extensive, volume भी extensive, temperature होची intensive, refractive index intensive. So B और D होची right answer. The following is or are endothermic reactions. ये भितर कोडा endothermic reaction. Combustion सबु बड़े exothermic. Decomposition of water. डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर हबो एठी एंडोथर्मिक काहे कि कंबशन केस सबोले एक्सोथर्मिक बट वाटर डिकम्पोज करिया पे हमको किछि एनर्जी सेटा को देबा को पड़े तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस मोस्टली एंडोथर्मिक. डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन इनटू इथिलीन. डिहाइड्रोजनेशन बॉन्ड एठे ब्रेक करा जाउछि. डिहाइड्रोजनेशन माने इथेन रो दीटा हाइड्रोजन CH वाला बॉन्ड ब्रेक करा तो ई केस रे भी एनर्जी प्रोवाइड करा. Conversion of graphite to diamond ଆମେ ଜାଣିଛେ graphite diamond ରେ କେତେବେଳେ convert ହବ ଯେତେବେଳେ ସେଟା high pressure ଆଉ high temperature ରେ ରଖାଯିବ ମାନେ energy provide କରାଗଲା. ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆମେ କହିପାରିବା graphite ଆଉ diamond ଭିତରେ କୋଉଟା standard state of carbon. Standard state of carbon ହଉଛି graphite. ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛେ କି standard state ହଉଛି most stable state. standard state ରୁ ଆଉ କୋଉ ବି state କୁ ଯଦି ଯିବା ତାର instability ବଢିବ यानी कि energy ବଢିବ ମାନେ ସେ energy absorb କରିଛି ତା ତ ଏଇଟା ବି endothermic reaction. ତ B, C ଆଉ D ହଉଛନ୍ତି endothermic reactions. Next, among the following the state functions is or are. कोड़ा कोड़ा state function internal energy हम जानते हैं state function. work केबे भी state function नहीं. enthalpy भी state function. तो आंसर होची A और D. Among the following the intensive property माने जोड़ा depend करेनी amount of matter ऊपर. कंडक्टिविटी कंडक्टेंस जदि से कोई था सेटा एक्सटेंसिव था. कंडक्टिविटी गोटे इंटेंसिव प्रॉपर्टी. रेजिस्टेंस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ईएमएफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हबो. ईएमएफ अगेन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से कोई नहीं हीट कैपेसिटी कहि सो 4 रो ए और बी हबो करेक्ट आंसर. Now, 1 mole of an ideal gas at 300 Kelvin in thermal contact with surrounding expands isothermally from 1 liter to 2 liter against a constant pressure of 3 atmosphere. In this process, the change in entropy of the surrounding will be 1 mole of an ideal gas achi 300 Kelvin temperature thermal contact with the surrounding expands isothermally from 1 liter to 2 liter. देखो आइसोथर्मली से कहला आइसोथर्मली से पचार हमको राइट
यानी एटा होची गोटे केस ऑफ आइसोथर्मिक एक्सपेंशन। से कौन पूछा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग विल बी चेंज इन एंट्रोपी माने कौन हम एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग क्वेश्चन को तो बहुत माइन्यूटली पढ़िया पड़ियो काहे ना गोटे गोटे वर्ड चेंज हेले गोटे गोटे मीनिंग चेंज हेतलो से कहूचे चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग एटी क्वेश्चन रे जल्दबाजी रे चेंज इन एंट्रोपी देखिए पिला माने कौन करिवे चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट कर देबे से कहिछि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग कोन हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन ओके तो फर्स्ट हमको कौन कैलकुलेट करिया पड़ियो एठी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग पई आइसोथर्मल से कहला आइसोथर्मल माने डेल यू इक्वल टू 0 डेल यू इक्वल टू जदी 0 वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ हीट हबो वर्क रो फार्मूला कौन थिला वर्क रो फार्मूला थिला माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी बिकॉज इट गोटे कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर छी अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर माने एटा गोटे इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ओके अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर वर्क थिला माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी तो हीट है जीवो माइनस ऑफ सॉरी हीट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एटा हीट ऑफ सिस्टम हम रखो एटा हीट ऑफ सिस्टम हमें कैलकुलेट करछे वर्क डन बाय सिस्टम माइनस ऑफ माइनस पी एक्सटर्नल into del v is equal to minus of minus 3 into 2 liters equal to 6 liter 2 liter ने एटा 1 liter हो कहना चेंज इन वॉल्यूम में देखो तो एटा हो 3 लीटर एटमॉस्फेयर 3 लीटर एटमॉस्फेयर है वाला तो गोटे जिनस मन रखो डेल एस ऑफ द सराउंडिंग हबो माइनस ऑफ डेल एस ऑफ द सिस्टम माइनस ऑफ डेल एस ऑफ द सिस्टम कहीं की हबो डेल एस ऑफ द सराउंडिंग बिकॉज से कहिछि कि आइडियल गैस टा थर्मल कांटेक्ट विथ द सराउंडिंग्स अछि थर्मल कांटेक्ट विथ द सराउंडिंग्स अछि गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस होछि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज इन थर्मल कांटेक्ट विथ द सराउंडिंग जदि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस थर्मल कांटेक्ट विथ द सराउंडिंग्स अछि दैट मींस गैस रो टेंपरेचर और सराउंडिंग रो टेंपरेचर सेम अछि जदि गैस थर्मल कांटेक्ट विथ द सराउंडिंग अछि गैस और सराउंडिंग रो टेंपरेचर सेम अछि गैस और सराउंडिंग टेंपरेचर सेम माने सिस्टम और सराउंडिंग रो टेंपरेचर सेम अछि जदि सिस्टम और सराउंडिंग रो टेंपरेचर सेम अछि सेही केस रे जो हीट एक्सचेंज हुए से हीट एक्सचेंज गोटे कांस्टेंट प्रेशर रहला यानी कि सेटा हबो डेल एच तो हमें जानछे जदि दी जन जकर टेंपरेचर सेम अछि जत्ते की हीट सिस्टम लूज करिवो सेत्ते की हीट सराउंडिंग गेन करिवो यानी कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल एच हला तो डेल एच ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एच ऑफ द सराउंडिंग तो डेल एस ऑफ द सराउंडिंग कौन होगा del s of the surrounding equal to del h of the surrounding divided by temperature equal to minus of del h of the system divided by temperature that is minus q system by temperature minus of q यानी minus of 3 divided by temperature होची 300 केल्विन तो एटा है जीवो सी हमको जूल पर केल्विन रे खोजिया पई कहछि हमर एटा अछि लीटर एटमॉस्फेयर अछि और जूल रे खोजिया पई कहछि माने मल्टीप्लिकेशन बाय 101.32 होबो राइट 101.32 होबो तो ई केस रे हमर कोन हे जिवो 1.0132 माइनस रहबो एठी जूल पर केल्विन यानी ए आंसर हम हमरो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 6
राइट। से कहछि कि द रिवर्सिबल एक्सपांशन होछि एठी रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कंडीशंस इज ऑन द फिगर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो P1 V1 T1 এটা হচ্ছে আইসোথার্মাল এক্সপানশন, এটা হচ্ছে অ্যাডিয়াব্যাটিক এক্সপানশন, P2 V2 T2 P3 V2 T3 বাসিলা ওকে। তো এই কেসে সে কোচি রিভার্সিবল এক্সপানশন হচ্ছে দুইটা দেখো রিভার্সিবল ওকে। তো ফার্স্ট অপশন হচ্ছে T1 ইকুয়াল টু T2 এটা করেক্ট হবো কাହିଁକି ନା এটা আইসোথার্মাল এক্সপানশন यानी कि T1 ଯେତେ ରହିବ ଟେମ୍ପରେଚର T2 ବି ସେତେ ରହିବ ଆଇସୋଥର୍ମାଲ ରେ ଟେମ୍ପରେଚର ସେମ୍ ରେ, ତ ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଅଛି। T3 ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ T1 adiabatic expansion ଗୋଟେ adiabatic expansion ହେଲା, adiabatic expansion ରେ କଣ ହୁଏ adiabatic ମାନେ Q equal to 0 यानी कि del U is equal to W ହବ, यानी कि ଯେତେ work ସେ କରିବ expansion ହଉଛି ମାନେ ଏଠି system ନିଜେ work କରୁଛି, ନିଜେ work କରୁଛି ମାନେ ନିଜ energy lose କରୁଛି, energy lose କରୁଛି ମାନେ temperature କମ ହଉଛି, यानी कि T3 less than T1 ହବ, right? T3 is less than T1 work isothermal is greater than work adiabatic। वर्क हमें केମିତି କରିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर द पीवी कर्व। तो एई एरिया हमें नहीं ଯିବା, ଆମେ ଦେଖୁଛେ कि एडियाबैटिक रो एरिया होची एटा और आइसोथर्मल रे गोटे एक्स्ट्रा एरिया अछि जोटा एटा, तो ऑब्वियसली आइसोथर्मल वर्क इज ग्रेटर देन एडियाबैटिक वर्क। डेल यू आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन डेल यू एडियाबैटिक, ऑब्वियसली हमें देखुछे कि एडियाबैटिक कंडीशन में देखो हमें जानछे कि आइसोथर्मल कंडीशन रे डेल यू इज इक्वल टू 0 अच्छी राइट। आइसोथर्मल कंडीशन रे del u is equal to 0 होबो, बट एडियाबैटिक कंडीशन रे del u is equal to वर्क डन होबो राइट। आइसोथर्मल रे del u 0 होला, बट एडियाबैटिक रे del u equal to वर्क डन होबो। हमें जानछे एक्सपांशन रे वर्क डन सब बेले नेगेटिव होबो, तो 0 is greater than negative, so D भी एटे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें देखिबा मैच द फॉलोइंग। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड रो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हला, एटा गोटे फेज ट्रांजिशन हबो कि? यस एटा गोटे फेज ट्रांजिशन हबो, सो ए रो गोटे पी गोटे करेक्ट आंसर हबो। एलोट्रोपिक चेंज हबो कि? एलोट्रोप किसी एटे चेंज होनी, तो क्यू हबनी। डेल एच पॉजिटिव हबो कि? यस डेल एच पॉजिटिव हो, बिकॉज़ सॉलिड रो गैस जे यानी कि एनर्जी एटा एब्जॉर्ब होईची। डेल एस पॉजिटिव हबो कि? यस डेल एस पॉजिटिव हबो। डेल एस कहीं पॉजिटिव हो, बिकॉज़ एंट्रोपी एटे इंक्रीज करिची। डेल एस नेगेटिव हबनी। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हेची एतिरे एतिरे, फेज ट्रांजिशन एटा नाही, तो पी हबनी। एलोट्रोपिक चेंज बी हबनी। डेल आर डेल एच पॉजिटिव हो, यस हीट एब्जॉर्ब हेले ही डिकम्पोजिशन हो। डेल एस भी पॉजिटिव हो, बिकॉज गोटे सॉलिड रो गोटे गैस प्रोड्यूस होची, तो आर और एस हो। दीटा हाइड्रोजन एटम रो हाइड्रोजन बनला, फेज ट्रांजिशन एटा हबो कि नाही? एलोट्रोपिक चेंज नाही। डेल एच नेगेटिव हो, ए केस रे एनर्जी रिलीज हो। डेल एस भी पॉजिटिव हबनी, बिकॉज दीटा एटम रो गोटे मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होची। डेल एस एठी नेगेटिव हबो, सो ओनली टी ऑप्शन। फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस रेड फॉस्फोरस एटा गोटे एलोट्रोपिक चेंज हो, बिकॉज एटा एलोट्रोप अछि, फेज ट्रांजिशन नाही, एटा एलोट्रोपिक चेंज, दैट इज क्यू राइट। क्यू हला एटा। डेल एच पॉजिटिव हबो कि नाही? डेल एस एठी नेगेटिव हबो। डेल एस कहीं की नेगेटिव हो, बिकॉज हम जानचे व्हाइट फॉस्फोरस होची, व्हाइट फॉस्फोरस होची स्टैंडर्ड स्टेट, तो स्टैंडर्ड स्टेट रे रहबा होची सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्टैंडर्ड स्टेट रो आउ को स्टेट को जदी हम नेले सेटा नॉन स्पॉन्टेनियस होला, यानी कि डेल एस नेगेटिव हबो। Match the thermodynamic process given under column 1 with expressions given under column 2. Freezing of water at 273 Kelvin and 1 atmosphere. Freezing where heat change 0, work done 0. Dita jaga wrong. Freezing where heat obviously change हुए, work भी हुए। Del S of the system is less than 0. Yes, del S of the system less than 0 होगा। Negative होगा कहीं ना liquid रू solid ऐसे, right? सॉलिड आर लिक्विड रू सॉलिड आसे, तो एंट्रोपी कम हुए। डेल यू इक्वल टू 0 होबो। यस डेल यू इक्वल टू 0, बिकॉज़ एटा गोटे आइसोथर्मल, बिकॉज़ 273 केल्विन अछि राइट। 273 केल्विन माने डेल यू इक्वल टू टेम्परेचर कांस्टेंट अछि, टेम्परेचर कांस्टेंट हेले एटा 0 होबो राइट।
del G equal to be 0 hobo. Yes, del G equal to be 0 hobo. Actually del U 0 hobani ଏଠି del U 0 hobani because internal energy of fusion भी exist करे. Del G 0 hobo because it have equilibrium. Expansion of one mole of an ideal gas into vacuum under isolated conditions. Expansion of one mole of ideal gas under isolated condition. Isolated condition रे obviously heat change 0 hobo. vacuum रे expansion होची so work done भी 0 hobo. एंट्रोपी बढ़ुची एक्सपेंशन होची माने तो डेल एस सिस्टम लेस देन 0 हबनी यदि वर्क डन 0 क्यू 0 तो डेल यू भी 0 ही हब del G एठी 0 हबनी because it is spontaneous process. Mixing of equal volumes of two ideal gas at constant temperature and pressure in an isolated container. Isolated रे obviously Q equal to 0 हब तो P is a correct answer. Mixing of equal volume of two gas. Mixing of equal volume. Mixing होची एठी. Mixing हेले किछि वर्क डन हुएनी तो एठी Q हबो. Similarly, del S system mixing the spontaneous तो R हबनी del U 0 हबो because Q और W 0 अछंती del G 0 हबनी because it is spontaneous process. Reversible heating बोली से कहि दै छै नि कि एटा ଗୋଟେ equilibrium process. Reversible माने equilibrium process of hydrogen gas temperature बढ़ुची followed by reversible cooling to एति. Heat exchange obviously 0 हबो. काहे कि heat exchange 0 हबो जति की एब्जॉर्ब वाला हीट से कूलिंग भी होला वर्क डन रिवर्सिबल कहछि माने वर्क डन भी 0 हबो यानी कि S भी 0 हबो और ए केस रे T भी 0 हबो बिकॉज़ रिवर्सिबल माने इक्विलिब्रियम रे अछि. If the bond dissociation energy of xy, x2 and y2 are in the ratio 1:1:0.5 and enthalpy of formation for xy is minus 200 kilojoule, the bond dissociation energy of x2 will be. ठीक अछि enthalpy of formation of xy. Enthalpy of formation of xy माने x plus y gives rise to xy होची minus 200 kilojoule per mole, right? तो एई केस रे enthalpy of formation of xy जे तेते हला bond dissociation energy of xy केते हबो 200 kilojoule per mole हबो, right? Bond dissociation energy 200 kilojoule per mole हबो कि नै सी कहिछि 1:1:0.5 यानी कि x रो भी 200 किलोजूल हबो y2 रो 100 हबो तो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन रो x2 हो जिवो 200 ना नै the correct relationship between free energy change and corresponding equilibrium constant हम जान छै स्टैंडर्ड क सब बेले del g नॉट नि आबो स्टैंडर्ड पई minus rt ln k हबो तो 8 रो c होची करेक्ट आंसर. Enthalpy change for a reaction does not depend upon use of different reactants for the same product. Nature of intermediate reaction. Enthalpy change does not depend upon the intermediate reaction steps. Intermediate reaction steps जत्ते होची has slur सबोले तार summation ही final answer है. Ideal gas expands in volume from एतिकी to एतिकी at 300 Kelvin against a constant pressure of 10 to the power 5 Newton per meter square, that is Pascal. The work done will be work done कहते हैं वो but a constant pressure होची work done it is simply P del V हबो minus of P external dV. Constant pressure होची minus of P external dV 10 to the power 5 into 10 to the power minus 2
-10 to the power -3 माइनस देखो माइनस पी डल भी यानी -10 to the power 5 into 10 to the power -2 -10 to the power -3 is equal to आंसर होगा -900 जूल, राइट। तो -900 जूल होगा आंसर 10 रो सी। Enthalpies of combustion of carbon and carbon monoxide एतिकी the enthalpy of formation of carbon monoxide per mole is कार्बन मोनोक्साइड रो फॉर्मेशन पई से कोची एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड माने कार्बन मोनोक्साइड 1 मोल फॉर्म हबा दरकार, सेटा तार निजरो एटम्स रो फॉर्म हबा दरकार और एटम्स निजरो स्टैंडर्ड स्टेट रे रहबा दरकार। तो कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैसियस गिव्स राइज टू कार्बन मोनोक्साइड गैसियस 1 मोल रहबा दरकार। तो एटा हाफ लिखिबा हमें। तो ये कैसे से କହିଛି कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन केमिति काढिबा और से हमको एंथैल्पीज ऑफ कंबशन जे। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जेतडे कंबशन रो काढिबार अछि हम जानि टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स काढिबार अछि कंबशन एंथैल्पी रे। टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स केते हबा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन से देछि -393.5 प्लस हाफ इंटू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्सीजन केते हो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ऑक्सीजन किछि हुए नहीं तो सेटा 0 माइनस ऑफ -283 यानी कि आसीबो माइनस ऑफ 110.5। consider an endothermic reaction X2 by with the activation energy EB and EF for backward and forward reaction in general there is गोटे एंडोथर्मिक से कहछि कि गोटे एंडोथर्मिक रिएक्शन विथ एक्टिवेशन एनर्जी EB एंड EF जदि एंडोथर्मिक रिएक्शन अछि तो तार गोटे जिंस मन रख del H is always equal to गोटे जिंस एटा मन रख del H is always equal to activation of forward minus activation of backward। से कहछि एटा गोटे एंडोथर्मिक यानी कि del H पॉजिटिव यानी EF ग्रेटर देन EB हबो, right? Consider the reaction nitrogen plus 3 hydrogen 2NH3 carried out at constant temperature and pressure. If del H and del U are enthalpy and internal energy changes, which of the following will be true? Del H और del U भीतर relation कौन हमें del H equal to del U plus del Ng RT। एठी देखो 4 moles of gas रो 2 moles of gas अछि यानी कि एटा नेगेटिव अछि माने del U ठु छोटो हबो del H। तो 13 रो ऑप्शन बी हबो करेक्ट, राइट। Assuming that water vapor is an ideal gas, internal energy change when 1 mole of water is vaporized at 1 bar and 100 degrees Celsius। Internal energy change से पचारछि हमको मोलर एंथैल्पी देछि एतिकी, राइट। Internal energy equal to molar enthalpy minus del Ng RT। एटा हमें एनसीईआरटी एग्जांपल रे करथिले सेही डायरेक्ट क्वेश्चन टी एठी छापिछि से, राइट। तो गैस रे एटा 41 किलोजूल माइनस देखो 1 मोल ऑफ वाटर एठी चेंज हेछि यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड रो गैस हेछि तो डेल एनजी एठी 1 हबो 1 इनटू आर हबो 8.3। लेकिन एटा जूल रे हमको किलो जूल रे कडिवार अछि तो डिवाइडेड बाय 1000 इनटू टी टेंपरेचर केते हबो 373 केल्विन। तर आंसर आसीबो 37.9 approx। Del H minus del U for the formation of carbon monoxide from its elements at 298 Kelvin will be del H minus del U for formation of carbon monoxide। Formation of carbon monoxide माने 1 mole carbon monoxide form हला निजर constituent element यानी ग्राफाइट रु और ऑक्सीजन गैस रु जो निजर स्टैंडर्ड रेट अछंदी एटा 1 मोल हबो सेटा हाफ ऑक्सीजन नि हबो। del H minus del U is equal to हमें जानचे del NgRT और del NgRT एट केते मोल गैस फार्मूला एपटे हाफ मोल गैस अछि एपटे 1 मोल गैस अछि यानी कि del Ng होछि +1/2 into R होछि 8.314 into 298 केल्विन। जदि एटा हम कैलकुलेट करिवा हमर आंसर आसीबो 1238 और एटा पॉजिटिव रे रहइबो तो 18 रो डी होछि करेक्ट आंसर।
In the conversion of limestone to lime, calcium carbonate gives rise to calcium oxide plus carbon dioxide. Values of standard enthalpy and standard entropy एतिकी एटा किलो जूल देछि एटा जूल देछि ए सब जिंस देखिबा बहुत इंपोर्टेंट कोटा को यूनिट रे देछि 298 एंड 1 बार यानी कि स्टैंडर्ड स्टेट रे अछंदी assuming एति do not change with temperature above which conversion of limestone will be spontaneous से कुछ temperature above which conversion of limestone into lime will be spontaneous केतेबेले हबो यानी कि हमको सही बॉर्डर लाइन टेम्परेचर काढियार अछि जेतेबेले सेही टेम्परेचर इक्विलिब्रियम फॉर्म होबो इक्विलिब्रियम पई कोन होबो del h इक्वल टू t del s दरकार काहे कि del g इक्वल टू 0 हो जिवो del g 0 होले del h इक्वल टू t del s तो t इक्वल टू del h by del s होबो del h by del s हले 179,100 काइना एंड जूल रे कन्वर्ट करे डिवाइड बाय 160.2 तो एटा अप्रोक्सीमेटली हमर आसीबो 1117.9 केल्विन जोटा हबो 1118.1 केल्विन तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जे 1118 केल्विन ताठ ऊपर को जदि हम टेम्परेचर नै जिबा तो डेल जी टा 0 रु नेगेटिव हवा स्टार्ट करिवो नेगेटिव हवा स्टार्ट करले रिएक्शन टी स्पॉन्टेनियस हबो राइट नेक्स्ट होची स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 is एतिकी द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एटम्स इज एतिकी एंड नाइट्रोजन एतिकी द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड इन NH3 will be तो एटा से हम कहछि कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहिछि माने हम फर्स्ट इक्वेशन लिखिबा NH3 गैसियस गोटे समान रखो जदी से कहिछि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तीनटा केस कोन अछि तीनटा इंपोर्टेंट जिंस टू बी केप्ट इन माइंड फर्स्ट होछि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रे 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म हबो से निजर एटम्स रु फॉर्म हबो ओके एटम्स जगह निजर स्टैंडर्ड स्टेट रहबे तो N2 plus H2 gives rise to NH3 तो एटा हबो 3/2 एटा हबो 1/2 राइट एमन दी जने जो गैस रहबो से कहै छै कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन और एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन दै छै तो से होय छै एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड केते एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन कोन देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन हबो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 from its atoms H plus H gives rise to H2 एटा होची तारो -436 केल्विन जदि -436 एटा तो आर जस्ट द रिवर्स रिएक्शन हमें नेबा H2 gives rise to H plus H एटा ही तारो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी तो एटा +436 है जीवो तो हाइड्रोजन रो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हला +436 किलो जूल Similarly, nitrogen रो से कोई enthalpy of formation from atom यानी कि N plus N gives rise to N2 होची हमारा -712 तो N2 रो bond dissociation enthalpy जीवो +712 किलो जूल एबे हम जानचे ए रिएक्शन रो हमको कौन दरकार स्टैंडर्ड एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड दरकार एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH3 बॉन्ड दरकार तो ए रिएक्शन रो टोटल ए रिएक्शन रे एंथैल्पी केते ए रिएक्शन रे एंथैल्पी ही फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ NH3 तो फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ NH3 होची -46 इज इक्वल टू एटा होची रिएक्शन एंथैल्पी इक्वल टू जदी बॉन्ड एंथैल्पी यूज करिवा टोटल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट हो तो रिएक्टेंट्स टोटल बॉन्ड एंथैल्पी होची हाफ इनटू 712 प्लस 3/2 इनटू 436 माइनस आर तीनटा बॉन्ड अछि कि नै से कहै छी कि हमर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ गोटे बॉन्ड तो 3x is equal to -46 तो ये केस रे हमर x रो वैल्यू आसीबो ए केस रे हमर x रो वैल्यू केते आसीबो x रो वैल्यू हमर देखो 2 3 जा 5 6 2 2 1 8 3 8 जा 24 4 के 2 3 1 जा 3 2 5 3 2 जा 6 654 plus 356 10 0 1 1 7 3 10 1 0 1 0 तो एटा को जब एपड़े नहीं जीवा तो एटा जीवो 1056 डिवाइडेड बाय 3 3 3 जा
5 जा 2 जा, तो plus 352 will be the answer. For a particular reversible reaction at temperature T, del H and del S were found to be both positive. If T is the temperature at equilibrium, then the reaction would be spontaneous one. ଗୋଟେ reversible reaction ଅଛି at temperature T and del H and del S ଦିଟା ଯାକ positive ଥିଲା. ଗୋଟେ temperature T del H minus del G equal to del H minus T del S. ଯଦି ଏଇଟା ବି positive ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ବି positive ଅଛି ଗୋଟେ temperature T ରେ, right? ଯଦି TE is the temperature at equilibrium, TE ହଉଛି ସେଇ temperature, TE କଣ? TE ହଉଛି ଯେତେବେଳେ del G equal to 0 ହେଇଯିବ, यानी कि TE ହଉଛି del H by del S, ତ TE ହଉଛି ସେଇ temperature at equilibrium। ତ reaction spontaneous କେତେବେଳେ ହବ? reaction ସେତେବେଳେ spontaneous ହବ ଯେତେବେଳେ ଏଇ total ଟା ନେଗେଟିଭ ହବ କି ନାହିଁ? ଏଇ total ଟା ନେଗେଟିଭ କେତେବେଳେ ହବ? ଏଇ total ଟା ନେଗେଟିଭ ହବ ଯେତେବେଳେ del H लेस देन टी del s ହେଇଯିବ, because ଦିଟା ଯାକ ପଜିଟିଭ ଅଛି, ତ t କୁ ଏତେ ବଡ କରାओ କି ଏଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ, because ନେଗେଟିଭ ରେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଏପଟେ ଆଣିବା ତ t ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଏତେ ହେଲା, ତ t ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଟି ହେଲା, यानी कि 26 ର b ହଉଛି करेक्ट आंसर। on the basis of the following thermochemical data, del G of formation of H plus aqueous is equal to 0. Okay, the value of enthalpy of formation of OH minus ion at 25 degrees Celsius. Enthalpy of formation of OH minus ion at 25 degrees Celsius କେତେ ହବ ସେ ପଚାରୁଛି। ଏଠି ଦେଖ enthalpy of formation of water ହବ କି ନାହିଁ? ଦେଖ water liquid ଅଛି, 1 mole ଅଛି ଆଉ ନିଜ gases, ତ ଏଇଟା ହଉଛି enthalpy of formation of water। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର enthalpy of okay, ଏଇଟା ଗୋଟେ last question ଆମେ ଆଜି କରିଦବା। The incorrect expression among the following will be del G system by del S total is equal to minus T. In isothermal process, W reversible equal to इतना, ये से correct अच्छी। ln K into RT equal to ଏତିକି, ଏଟା minus ହବ ତ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି, right? Okay, ତ ଏତିକି ରଖିବା, ଆଜିର sessions end ହେଲା, thank you।